Hello, good afternoon, everyone. I am CA Hemant Loya, the moderator of this webinar. We are delighted to welcome you all to this webinar, which is being organized by the Continuing Professional Education Committee of ICAI. It is my pleasure to be a moderator for the 93rd webinar on new labor codes and understanding income tax notices and key income tax amendments under Budget 2026 from 4 to 6 p.m. In a short while, we will start this webinar. First, I would like to apprise you about the CP committee. In today's ever-changing professional scenario worldwide, the biggest challenge the professionals face is how to stay on the top of their game while adapting to new requirements and norms. Therefore, it is imperative to aim to be up to date to offer unique guidance and influence others with their innovative approach and expertise. It is also vital to stretch old ideas beyond traditional boundaries to create new perspective. In this context, continuing professional education facilitates professionals to maintain, improve, and broaden their knowledge, skill, and expertise required to achieve their professional goals through webinars, seminars, etc. The program for this evening is as follows. We will have two sessions of 1 hour each, and the topics are new labor codes, IBC interface, DPDP Act, and other miscellaneous provision, which will be taken by Sri CA Sunil Kumarji. And second session, understanding income tax notice and key income tax amendment under Budget 2026, which will be taken by CA Ayush. Our eminent speakers will talk about the above mentioned emerging areas of professional interest. Now, going ahead, I would like to introduce our first session speaker, CA Sunil Kumarji. He is a CA with over 14 years of professional experience practicing since 2011 and holds multiple qualifications like CS, LLB, MCOM, DISA, and registration as an insolvency professionals with IBBI, along with certification course in forensic audit, peer review, concurrent audit, and artificial intelligence. Sir has very extensive expertise across taxation, labor laws, real estate, RERA, and insolvency law, handling multiple complex matters such as personal insolvency, labor law disputes, regulatory inspection, and corporate compliances. He has been empaneled as a peer review with ICAI and actively undertakes forensic audits and transactions review under IBC and other regulatory frameworks, combining legal insight with strong business understanding. He has been a regular faculty on labor laws, delivering practical training sessions for ICI CP program, professional forum, and business association with a focus on compliances, inspection, and employer obligations. Now I would like to invite CA Sunil Kumarji to take his first session. Welcome, sir. About an introduction. Good evening. It is a pleasure to be part of today's webinar, and I am thankful to committee and committee chairman sir Satish Gupta sir and vice chairman sir for giving me this opportunity. Over a period of month, the committee has organized number of sessions on new labor codes to enable the members regarding the provisions and the key changes from the earlier laws. But this session is not to revisit that provisions, to revisit the code bare law. The today's session, we will cover some important provisions, some important act, and the impact of these act. We say the DPDP Act, Digital Personal Data Protection Act 2023, on the new labor codes and how it will interplay with the new labor codes. Second, we will discuss about the challenges to be faced by insolvency professional during the meeting out the labor law compliances, and after the implementation of new labor codes, how they will face and how it can be meet out properly. And finally, we will discuss the impact of new labor codes on the audit procedures, and also ICAI has
issued a guidance on new labor codes for the auditors. Friends, we know that DPDP Act, Digital Personal Data Protection Act 2023 has been notified in phased manner on 13th November 2025, and some provision has been effective and some provision will be effective after 1 year from the date of notification, and remaining provisions will be enforced after 18 months. The act aims to on the principle data minimization. Such data should be collected from the data principle which is required, not blanket or unrestricted data. And further, the data should be processed for a specified purpose or legitimate purpose, not being otherwise. So today we will discuss some important provisions and how it will affect. So please let me allow to share my presentation. So it's a visible, sir. Thank you. We start from DPDP Act, then we will move on further. So friends, there are four definitions, key definitions, which will we understand and will relate with the provisions under the new labor codes. There are four definitions I have mentioned here: the data principal, data fiduciary, and data processor, and the personal data. In under the DPDP Act, and who is the data fiduciary? The data fiduciary is the person who collects the data for the specified purpose. For example, in the context of labor employment law, the employer collects the data from the employees and workers, including their personal details, Aadhaar, PAN, nomination details, medical informations, bank account informations, and many other details for different purposes, for PF returns, for ESI compliances, for gratuity compliances, for any other purpose. So, employer acts as a data fiduciary, and the data which relates is called the data principal. In this case, the employee or worker is the data principal. So DPDP Act 2023 has been aimed to protect the rights of data principal. So the data should not be misused, should not be leaked, should not be breached. In the employer act as a data fiduciary. So what is the need? What is the relevancy to understand this act for the employers? What is the current practice? I would like to reflect the current practice adopted by the employers. When whatever any information is required at the time of registration, at the filing of returns, he collects the ample data from the employee or workers and share with the consultants, the labor law consultants and auditors, without checking that whether it is relevant for that purpose. It may be convenient for the employer to share all data, but it is not be safe to provide all the data which is not required. So after the implementation of this act, it is to be taken care by the employer before he share the data with the labor law consultant or any auditor or any other professional or any other vendor who is providing the payroll services or other services. The data only which is required to be shared, it should be shared in a confidential manner, and there should be proper engagement, proper contractual terms, and proper confidential clause should be there. So this is the data fiduciary. The employer acts as a data fiduciary. Second is the data principal. Who is the data principal? The data principal is the individual whom the personal data relates.
In this case, the data principal is the employees and worker. The employer keep the huge data. So a data principal has the right to know okay, which data and for which purpose the employee is required, and it can be corrected by any time by the data principal. And if it is not longer required, it may be erased by the employer. And at the request of the data principal, the data should be deleted or erased by the employer, or we may say the data fiduciary. Third is the data processor. The who is the data processor? Who process the data on behalf of a data fiduciary? In this case, if we understand, the employer provides the data to the consultants or process the data on different softwares. These parties are called the data processor. So if we see the example what I have explained earlier, the employer provides the dump data to the consultant, to the professionals. So in this case, the professional or consultant is the data processor. So it is very important to understand for both data processor and data fiduciary. The data fiduciary should not share all data with the data processor. He should check what is required for the and what purpose he is sharing the data, and the data which is not required should not be shared with the data processor. Even he is consultant, he is the auditor. It is the aim, it is the principle of data minimization. So before collecting the data from the data principal, the data fiduciary, or we may say in this case, the employer should check he should not collect the data which is not relevant. Otherwise, it may not be safe for it. And the fourth term is the personal data. The personal data means any data about an individual who is identifiable by in relation to such data. Means the data which belongs to an individual or who can be identifiable. So these four terms are very important to understand and to fix the liability and to understand the rights of the data principal. Now we move on the very important parts of the obligation of data fiduciary. So first is the point is the processing for lawful purpose. The data fiduciary obtains the data for Am I audible, sir? Any problem? Sir, am I audible, sir? Hemant ji? One is there. Sir, obligations of data fiduciary. First is processing for lawful purpose. Data fiduciary should collect only such data which is relevant and which is necessary. Second is it should be processed for lawful purpose or a specified purpose. It means the data for which it has been collected should be processed only for that purpose, not for other. Second important thing is that notice must be given by the data fiduciary to the data principal. It is very, very important. Before each request, the consent should be proper, consent should be clear, consent should be unconditional. So it is very important to communicate by the employer with the employee, and data should be updated and not irrelevant data should be erased and should be communicated properly to the employee. Security safeguard, it's a very important कि जो data storage है, data retaining of data, it should be in such manner so it cannot be breached, it cannot be misused, and it should not be accessed by the person who is not authorized. So this is the duty of the employer who is acting as a data fiduciary, should maintain the data in proper way, should be share the data only that data with the consultant, with the professionals after the
engagement after the proper agreement, including the confidentiality terms and other things. So the risk may be diluted or risk may be avoided, risk may be mitigated. This is the concept of consent. Okay, consent should be provided by the data principal. It should be without any pressure, without coercion. It should be clearly defined purpose for which data has been provided by the data principal. The full information should be provided by the employer to the employee. It should be unconditional and it should be with clear affirmative actions. And once, if the data principal has requested, has withdrawn their consent, then the the data fiduciary should raise the data of that data principal. This is not so much relevant, but I have mentioned here, processing of personal data of children. If there are children, then data fiduciary must obtain the consent from parent or lawful guardians, and same provisions are there regarding data protection. This is the rights of the data principal. Okay. The data principal, in this case, the data principal is the employee or worker. The employee has the right to obtain a summary of personal data being processed. The principal employee or worker may ask any time for which purpose and which informations has been processed by the employer, and which informations has been shared with the other persons, the data processor. The data principal may correct his data at any time and update. If there is any grievance to the data principal, he has the right to address and to connect with the data fiduciary or the consent manager. And it is very important that data principal has the right to nominate another person who shall exercise the rights of the data principals. So data is the assets, like assets, and the data principals has the right to nominate another person. I have summarized here some duties of the data principals. This is the regarding compliance with law. We should understand the very important points here. I have explained earlier also the minimization concept, data minimizations. Data should be collected only such data which is relevant or which is necessary. So it should employers should review their existing practices to ask to call to collect that information which is in addition to the requirements. So this is very important. Sorry, and it's very important for him to review their existing requirement, whether it is accordingly as per the law or as why it is relevant. If it is not relevant, it should be removed from the checklist. Second is the important point that information which has been collected by the data principal, if the employee has been left, if employee has left the information, even the data fiduciary, the employer is required to maintain the data for certain purposes, for statutory compliance purposes, but should not be written forever. It should be kept only for that period which is required as per the law, as per the audit purpose, as per the labor law compliances, and should erased only after once the period is once the statutory period is expired, statutory period is covered. There are huge penalties. I have mentioned here the penalties into crores. If the data fiduciary breach the obligations to take reasonable security, there are penalty of rupees 250 crores. So if we see the list, the penalties from
penalties up to rupees to 50 crores. So even small employers, there are no any category for employers or workers. Yeah, we can say the data fiduciary in this case. So there are no any such specific category regarding penalty. So even a small employer, even an employer who is who has enrolled 50 or 100 employees may also fall under the under this act and maybe liable penalty for the violation of this DPDP Act. So this is very important for the small employer also. Sorry, this is very important for small employer also because they have not proper digital mechanism to protect the data. So before sharing the data, before collecting the data, every employer is advised to keep the data properly with the making proper arrangement, written arrangement with the vendors, with the professionals with which the employer are sharing the data. So it's very important to understand the penalty schedule also. Now I move on the IP part, insolvency professional part. Insolvency professionals, the insolvency professionals who is managing the CIRP cases has to face number of challenges under the IBC law and other laws also. And after the implementation of new labor codes, the liabilities or precaution has been increased, has been enhanced because the insolvency professional has not the entire information, has not the complete information. He has to make efforts to obtain the information from the CD, from the suspended directors. And after the implementation of new labor codes, this is the additional liability to meet the compliances. Earlier also it is the liability to meet to ensure the level of compliances, but certain additional liabilities or additional compliances has been there. So this is very important challenges. I will explain some liabilities, some duties of the employers. In this case, the Insolvency Professionals Act in place of suspended directors, and he is the person who has the ultimate control over the affairs of the company. So it is the duty of the insolvency professionals to meet out the compliances under the laws, including the new labor codes. Under the new labor codes, it is the mandatory employer will issue the appointment letter. Now, this is the practical challenge for the IP because he has not the complete details. He has to obtain the information from the statutory portals like PF portal, ESIC portals, and some information has been come out in the knowledge of insolvency professional through the claims. So, up now to making the compliances under the new labor code regarding issuance of appointment letter, he needs to understand whatever the understanding, whatever the terms was decided with the company of that employee or that worker. It's a very important to understand the relevant documents, likely the issuance of wage slip. Under the codes, the wage slip, issuance of wage slip on or before the payment of salary, IP will have to issue the wage slip. So it is the important challenge for the IP how and which component, how the salary has been categorized, has been structured by the company or by the suspended directors for that person, for that employee. So before issuing a wage slip, he should know the contents of their salary. He should know the wage parts. So this is the very important for the IP to understand how they retrieve the information, how they will make the compliances under the new labor codes. Similarly, a grievance redressal committee for under the new labor codes, if there are 20 or more workers, then establishment will have to frame
the new the grievance GRC, sorry, grievance redressal committee. So how they will categorize, how they will identify, segregate between the workers and employees. To understand, to segregate, he required the person who's in which category, fixed term employment, in supervisory, administrative category, and what is the salary. So this is the very critical role of insolvency professionals to meeting out the compliances under the new labor codes. I have mentioned here the employee classification complexity, contract staff. To understand the contract staff, the IP should understand, IP should review the contractor agreement with the contractors. Further, the under the new labor codes, under the contract labor parts, there are requirement of licensing, uniformity in licensing. If there are 50 or more employees, then contract labor parts will be applicable under OSHWC code, and there are additional requirements. And to making these compliances, the complete information should be there, so the compliance can be met out by the IPs. Further, to ascertain the liabilities, because these codes have been implemented on 21st November 2025, and the wage definition has been changed in the manner the capping of allowances are there. If exclusion part, I will not explain here the wage definition, but we all know that there are 11 exclusions, clause A to K under section 2 clause 5. If these exclusions exceeds 50%, then it should be added back in the excess from 50% should be added back to the definition of wages. But it will create huge liability. It will enhance the liability under the gratuity provisions, under the leave salary provisions, and others. So, for the cases which are undergoing the CIRP, the IP should review the contracts, the terms of employees who are claiming, who has claimed, who are working in the company, to calculate the liabilities, and for the financial year 25-26 to make the valuation properly regarding the actual valuation or other valuations, to matching the liability properly as per the law, and to making the assumptions for actual valuation. He should take care, give the assumptions which was taken earlier years, and the assumptions which has been taken under the current, which will be taken under the current years, should be properly as per the new labor codes. So these, I have highlighted some important challenges for meeting the compliances under the new labor codes for IP also. Now I will touch upon some important provisions regarding audit standard of auditing and India's, and guidance note issued by the institute also for the auditors regarding the implementation of new labor codes. So I will summarize the labor codes. The 4 labor codes have been notified on 21st November 2025, in which 29 central labor laws has been subsumed. The Code on Wages 2019 has subsumed 4 earlier laws, including Payment of Wages Act, Minimum Wages Act, Payment of Bonus Act, and Equal Remuneration Act, and IRC Code 2020 has subsumed 3 labor codes. Code of Social Security has subsumed 9 labor codes, and OSHWC Code has subsumed 13 labor codes. So total 29 labor codes was subsumed
by these four codes. And their wage definitions, there are two clauses, two proviso which was inserted. First proviso was very important. 50% rule. If the exclusions exceeds 50%, then it should be added back. By this proviso, by this changes, it affects the ESI, PF, gratuity and leave encashment, retrenchment and overtime and others. So why it is important to understand for the auditors? Because auditors will have to check how the management has implemented the new labor codes. How has the management has assessed the impact of new labor codes? Because this definitions has impact on financial statements. Even therefore, the in guidance note issued by the ICI has formally recognized this fact. Labor law will affect the financial statement. So it is the duty of the auditor to assess the how the management has implemented the new labor codes. Gratuity liability has significantly changed. We have all seen that during the for the quarter ending October 25 to December 25, the gratuity provisions reported under by the listed companies has been significantly enhanced, and how the accounting treatment has been done. So it will depends how the employer has interpreted, how the employer has implemented the new labor codes. So before going for audit, it is the precaution for the auditor to change their planning, include the new labor codes provisions, include the impacts, include the documents which was used earlier. So how they have affected, how the management has implemented new labor codes, and how they will reflect the key changes, including financial impact or non-financial impact. SA 250 is regarding the changes in the law. If they are changing the law, there may be two categories. They may affect the financial statement. They may not affect the financial statements. If they affect the financial statement, it should be checked by the auditor whether it has been considered properly or not. If it has not been taken properly, then there are material misstatement in the financial statement, it should be reported properly. So under the guidance note, the ICI has issued the list of some SA 250, SA 315, 330, 570 and others. So this should be reviewed by the auditor during the audit for the financial year 25-26. This is the points I have elaborated here. Understanding the entity. Before going for the audit, now auditor will have to review regarding the entity. Even he is the older auditee, he is the earlier auditee, because he should understand the number of employees, the category of employee, whether the establishments, whether the employer has the permanent employee, fixed term employee, contract employee, gig employee, platform workers, and across the locations. So if the auditor has already assessed the entity, but for the financial year 25-26, he will have to review the entity again regarding the manpowers, regarding the locations, regarding the nature, and for that purpose, he should review the agreements with the employees for sample purpose. For example, for fixed term employee, he should review the contracts with the fixed term employees. For categorization regarding workers and employees, the auditor should know
the process, how the management has categorized between workers and employees. This is very important to understand for the auditors. I have mentioned the audit process flow regarding the labor code compliances from planning to audit conclusions. If we summarize at this point, so auditors should communicate. Auditors should communicate with the person TCWG. We say the TCWG, those charged with the governance, the management, how they have implemented the provisions under the new labor codes. What was the impact and how they have accommodated in the financials, how they have accommodated in the HR policies and others. And if they have not been, the auditor is not in a position to obtain the sufficient audit evidence, then they will have to report, or they will have to modify their opinion, or they will have to qualify the report. Or if they have obtained the sufficient audit evidence and has not been justified with the properly disclosure, so this will also be reported. So from the identification, recognition, and to the disclosure, labor component is a very important part, because from the month October 25 to 31 March 2026, for the financial year 25-26, there will be huge impact on payroll processing, HR policies, and others. So our auditors should know the process, also know the impact in two categories: the process which impact the financial statement, or which does not impact the financial statement but impact the other parts. So I have mentioned the key questions for management to know by the auditor, the how the management has applied, how the management has determined the applicability of the law after the implementation of new labor codes, what systems have been changed, whether there are any interpretation issue, whether any legal opinions have been obtained, and how the changes has been accounted for, whether actual valuations have been updated, assumptions for the actual valuations have been changed, and the disclosures made by the management is proper or updated. So these changes should be known by the auditor. And regarding the management representation letter, the auditor should review the MRN and should include these questions properly. Therefore, thereafter, the auditor should review or finalize the reports. So this is the additional part which was ignored by the, which was not properly reviewed earlier, but it should be clearly and specifically reviewed for the financial year 25-26 for the auditor. These are some audit documentations which should be reviewed by the auditor. Audit file should include the assessment, impact assessment, the procedures, changing the procedures, and changing the management judgments regarding the implementation of new labor codes, payroll and HR records. Whether if there are any opinions has been obtained by the employer, it should also be in the record. If there are any change in the HRMS system, payroll system, it should be reviewed. And management representation and regarding compliance checklist, earlier compliance checklist should be modified and should be reviewed as per the new labor codes. After the examination of the impact of the new labor code provision, the auditor should assess the opinion, whether it should be part of emphasis of matter, key audit matter, modified opinion. It will depend on the findings of the auditor after the substantive procedures and other procedures
the evidence obtained during the audit process. So this is the action points for the audit team. It should plan early. Before audit, they should include the points regarding the labor law audits, the points, the provisions which are under the new labor codes. It should be included into the audit plan. It should be discussed with the audit teams, and if required, they should involve the labor law specialists. So the documents can be reviewed properly. On this would also be important to understand we discussed that DPDP Act, so the agreements which have been prepared, the DPDP Act should be also be considered. So this clause should also be there, so it can be safeguard to professionals also. So these are three points I have highlighted here, and if there are any queries on these 3 points, I will request the moderator, please, if there are any questions in these 3 parts, I will be happy to take these, and after that I will touch upon some important provisions of earlier 4 codes. MT, if there are any questions. Now I discuss some important provisions under the code, these provisions. So these Sir, there is question this one. is the yes, please. Sir, question is gratuity applicable to daily wage workers engaged through a contractor? The agreement between the company and the contractor is for supply of, say, 100 manpower without specifying individual names. Sir, please repeat करिए sir question को please. Yes, sir. Is gratuity applicable to daily wage worker engaged through a contractor? The agreement between the company and the contractor is for supply of, say, 100 manpower without specifying individual names. Sir, the Gratuity Act earlier and now it has been covered under the Code on Social Security has not आप ये चीज समझिए जो प्रीएम्बल है ना सर एक्ट का जो टू एक्सटेंड द सोशल बेनिफिट टू ऑल वर्कर एंड एम्प्लॉय मैंने जो कोर्स बनाए हुए हैं वो इस तरह से फ्रेम किए हुए हैं और ऑब्जेक्ट ये है कि वो बेनिफिट्स एम्प्लॉय का वर्कर का उसको मिलना चाहिए तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की टू प्रोटेक्ट देयर बेनिफिट्स to protect the retirement benefits, protect the any benefits of the employees or worker. It doesn't matter अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं देता तो एम्प्लॉयर देगा तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर कि साहब उसको पेमेंट करेगा नहीं देगा तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को देना ही देना है दिस इज द बिल्कुल स्पेसिफाइड कि कोई भी बेनिफिट जो उसका है एम्प्लॉय का वर्कर का चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट वाला हो चाहे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली है तो वो बेनिफिट उसको मिलना है और पहले अब मैं थोड़ा सा प्रोविजन एक्सप्लेन करूं कि पहले ये होता था कि सैलरी टाइम पर डिस्पर्स नहीं होती थी और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अपने आप को अवॉइड करता था कि ठीक से मुझे आइडिया ही नहीं है उसने पेमेंट किया कि नहीं किया बट अंडर द न्यू जो ड्राफ्ट रूल्स आए हैं वहां पर तो उन्होंने प्रोविजन ये दिया है कि 7 दिन के अंदर अगर वो पेमेंट नहीं करता सैलरी का तो वो 15 डेज के अंदर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पेमेंट करेगा तो ये ग्रेचुटी वाला पार्ट जो आप कह रहे हैं कि अगर ग्रेचुटी कॉन्ट्रैक्टर नहीं देता तो मैं उसको मिलेगी उसका राइट है अगर कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं देगा तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को देना होगा Next question is whether actually report will cover compliance with regards to new labor law. सर एक्चुअली रिपोर्ट जो है ना केवल एक्चुअली रिपोर्ट से काम नहीं चलता वी शुड रिव्यू द रिपोर्ट वी शुड रिव्यू द एजम्पशंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच द एक्चुअली हैज रिपोर्टेड एक्चुअली हैज मेक द वैल्यूएशन तो जो वैल्यूएशन है जो उसने एक्चुअली ने किया है उसकी एजम्पशंस को जानना बहुत जरूरी है वो एजम्पशन ऑडिटर को और एम्प्लॉयर को समझना चाहिए इट शुड बी रिलायबल इट शुड बी प्रॉपरली अगर कोई मतलब
फिर तो क्या होता है, अगर एक्चुअली रिपोर्ट ही सब कुछ हो जाए तो एक्चुअली तो प्लस माइनस कुछ भी कर सकता है, कुछ भी एजम्पशन लेगा उससे प्लस माइनस हो जाएगी लाइबिलिटी। तो द एजम्पशन शुड बी प्रॉपर, शुड बी क्लियर। The next question is under fixed term employment, if an employee completes 1 year in December 25, will gratuity be payable under the new labor law? हाँ सर, वो तो आफ्टर, मतलब वन जो 21 नवंबर को जब एक्ट इम्प्लीमेंट हो गया, एक्ट नोटिफाई हो गया, तो दीज प्रोविजंस आर एप्लीकेबल एंड ये जो 1 साल वाला क्लॉज है उसको बेनिफिट मिलेगा। So one more query. The threshold for applicability of ESIC is up to rupees 20,000, 21,000 per month. So this threshold refer to basic DA or is it gross pay? सर देखिए, अभी जो डेफिनेशन तो जो अभी न्यू लेबर कोड में आई है, डेफिनेशन तो वही रहेगी। जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन सब है, ईएसआई में सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविजंस क्या है कि अभी जो पुरानी डेफिनेशन थी उसमें लगभग ग्रॉस सैलरी को अपन उसमें कंसीडर करते थे। अब जो नई सैलरी आई है उससे उस पर उसका कवरेज बढ़ेगा। तो जो नई सैलरी है, मीनिंग तो सैलरी का वही रहेगा, उसके लिए कोई ईएसआई के लिए अलग से कोई मीनिंग नहीं आएगा। तो जो बेसिक, अगर अपन बात करते हैं, बेसिक ही उसकी सैलरी मानी जाएगी अब ईएसआई के पर्पज से भी। उसके लिए कोई स्पेसिफिक कोई नई डेफिनेशन नहीं है, वही डेफिनेशन को यूनिफॉर्म किया है। वही डेफिनेशन पीएफ के लिए, वही ईएसआईसी के लिए। और इसका ही इम्पैक्ट ये आएगा कि जो सैलरी 40,000 रुपए, 35,000 रुपए, जो जो मोर देन 21,000 की जो सैलरी ले रहे थे, वो भी अब ईएसआई के दायरे में आ सकते हैं। One more query. If an employee is employed by contractor for several contractees, which contractee would be liable for salary gratuity under new code? सर देखिए, अगर इसके लिए हमें एक उसकी एम्प्लॉयर की डेफिनेशन दी हुई है इन द एक्ट, एम्प्लॉयर हैज बीन डिफाइंड एंड द टू कैटेगरीज हैज बीन इंक्लूड स्पेसिफिक। फर्स्ट, एक कैटेगरी है इसमें कॉन्ट्रैक्टर, इसमें एक कैटेगरी जोड़ा हुआ है कि एम्प्लॉयर इंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्टर। अगर अब हम कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन देखते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन में लिखा है कि कॉन्ट्रैक्टर इंक्लूड सब कॉन्ट्रैक्टर। तो चाहे कितने भी सब कॉन्ट्रैक्टर हो, कितनी भी बड़ी चेन हो, वो कॉन्ट्रैक्टर माना जाएगा। और कॉन्ट्रैक्टर है तो कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय माना जाएगा। तो आप अगर उसकी चेन की डिटरमाइन करके जिसके यहाँ पर काम हो रहा है, तो वो तो हो गया अल्टीमेट लाइबिलिटी उसकी। और जो ऊपर की जो भी चेन है वो उनको बस ध्यान रखना है, क्योंकि उनका उसको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और अल्टीमेट तो जिसके यहाँ पे काम हो रहा है, जो जिसको हम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कहते हैं, उसको ध्यान रखना है। तो पहले तो ये होता था कि सब उसकी लाइबिलिटी डिले हो जाती थी। पर जो रूल्स जिस तरह से ड्राफ्ट हुए हैं उसमें ये कि उनकी लाइबिलिटी डिले नहीं होगी, क्योंकि लाइबिलिटी डिले होने पे इम्प्रिजनमेंट तक के प्रोविजंस हैं। तो इंटरेस्ट और पेनल्टीज तो होगी होगी। अगर कुछ ऐसा मेलाफाइड इंटेंशन से कुछ भी डिले किया जाता है तो वो उस प्रैक्टिस के तहत और उस कंप्लायंसेस के तहत उसमें मतलब पेनल्टीज, मतलब इम्प्रिजनमेंट के प्रोविजंस हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको ध्यान रखना है कि बेनिफिट तो उसको मिलना ही है। अब आप ये कहोगे सर मैंने काम किया और मेरे यहाँ काम किया है और मैंने अपॉइंट, सामने वाले ने अपॉइंट किया है, तो मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो वो लोग उसको कॉन्ट्रैक्ट को लेके आते हैं बीच में। से हमारा तो रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है कॉन्ट्रैक्टर से, सब कॉन्ट्रैक्टर से, कि लाइबिलिटी उसकी है। ये लाइबिलिटी आपस में आप लोग रिकवर कर सकते हो, बट जो इन नटसेल समरी यही है कि उसका बेनिफिट आप पहले दे दो, फिर आपस में आप रिकवरी कर लो, जो आपका एग्रीमेंट है, जिस तरीके से आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है। बट उसका बेनिफिट टाइमली दे दो उसको। The last query. If there is an additional liability due to increase in basic, will it attract interest and penalty? नहीं, नहीं समझा सर, दोबारा बोलिए। Sir, member is asking if there is change in basic pay, will it attract interest and penalty? नहीं, तो बेसिक पे से इंटरेस्ट और पेनल्टी का इम्पैक्ट कैसे आएगा सर? आप देखिए, मान लो कि जो आदमी आज रिटायर होता है, आज छोड़ के जाता है, ठीक है, तो उसका जो जो ड्यू होगा, तो आज जो लॉ इम्प्लीमेंट हुआ उससे क्या फर्क पड़ा? वो उसकी सैलरी तो उसको टाइम से मिल ही रही है। तो सैलरी उसकी क्या थी पास्ट में, तो वो उसको मंथली मिल ही रही थी। जो आज बात आती है कि अगर उसने उसको किसी चीज इंटरेस्ट कब लगता है, पेनल्टी कब लगती है, जब उसका डिले होता है, जो उसको टाइम से नहीं मिलता। तो अगर टाइम से नहीं मिलोगे तो उसका बेसिक से कोई लेना देना नहीं है। भाई चेंज बेसिक में चेंज हुआ, किसी में कोई भी चेंज हुआ, तो उसका जो भी इम्पैक्ट है उसको अगर टाइमली मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान चलिए 21 नवंबर को ये लॉ की डेफिनेशन चेंज हुई, तो लॉ की डेफिनेशन बड़ी, अगर मैं उसको ग्रॉस तो उसको वही मिल रही थी।
चाहे अपन ने उसमें कुछ भी चेंजेस किए, सब्जेक्ट टू मिनिमम वेजेस एक्ट के साथ वो मिनिमम वेजेस से कम दे रहे थे या मिनिमम वेजेस नहीं कर पा रहे, इस वजह से सैलरी बढ़ाई, तो सैलरी बढ़ाई तो वो डिफॉल्ट हो गया पुराने एक्ट में कि मिनिमम वेजेस का डिफॉल्ट हुआ। पर अगर मिनिमम वेजेस वाला कंसेप्ट नहीं है तो यहाँ डिफॉल्ट वाली जो इंटरेस्ट पेनल्टी तो लगेगा जब डिफॉल्ट होगा, तो यहाँ उससे चेंज बेसिकली चेंज होने से मेरे ख्याल से उस पर कोई डिफॉल्ट नहीं होगा और कोई इंटरेस्ट पेनल्टी का क्वेश्चन अराइज नहीं होता। Okay, okay, sir. So now I think I have like 5 to 10 minutes, so I can summarize. I can touch upon some important provisions if you allow me. Hemant ji, can I discuss 5 to 10 minutes of important provisions? Yes, sir. So I will discuss. I'm highlighting here some important provisions. This is records, returns, and notices. Section 50. Why I am highlighted here because the question is कि code on wages किस पर applicable है. Yeah, this is very important part regarding the applicability of the code on wages. This uh, section says that every employer should maintain fiscal registers, including employee register, wage register, and should display the notices on prominent place and issue of wage slip. So every employer, but this section has specifically is granted specifically exemption for the employer who have employed only up to 5 persons regarding agricultural or domestic purpose. So what this section says, these three compliances regarding maintenance of register, regarding display of notices, and regarding issue of wage slip is not required to be fulfilled by those employer who has employed only up to 5 persons or only for agriculture and domestic purpose. और डोमेस्टिक पर्पज को भी क्लैरिफाई किया हुआ है कि वो एक्सक्लूसिवली डोमेस्टिक में होना चाहिए। इफ अगर वो कॉम्बिनेशन में रहता है कमर्शियल डोमेस्टिक तो वो डोमेस्टिक नहीं माना जाएगा। तो दिस सेक्शन आल्सो क्लैरिफाई रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी के अपन ये सोचते हैं सब 10 की कोई थ्रेशोल्ड है, 5 की थ्रेशोल्ड है, ऐसी कोई थ्रेशोल्ड कोड ऑन वेजेस में स्पेसिफाइड नहीं है। तो कोड ऑन वेजेस के जो प्रोविजंस है दे विल हैव टू फॉलो बाय द एवरी एम्प्लॉयर। These are the penalties under the code. Okay, the first time the penalty is lesser, and for the repeat penalties for the repeat offense, then the imprisonment provisions should there are also imprisonment provisions. These are the I have mentioned the draft from the draft rules, the Form 1 employee registers. So these are the details which should be recorded under the employee registers by the employers. So what I discussed in the DPDP Act 2023, कि DPDP Act its concept is data minimization, कि जो data fiduciary है तो in the employment or employer-employment relationship, the employer is the data fiduciary, acting as a data fiduciary. तो जो information required है वही information उसको collect करनी चाहिए। The employer should collect only such information which is required. So employer should review their existing checklist, existing information in the system. If they are not relevant, it should be communicated properly and should be raised from the system. And if once the rules notified, it should be finalized how the informations will be kept, will be stored and will be processed. So I have highlighted such information because there are such informations are here, and this is the current practice adopted by most of the employers, who provides the whole dump of the data to the consultant, to the auditor, which is not required at that time, including Aadhaar, bank details, and others. So they should segregate the informations regarding audit purpose, regarding payroll processing, regarding PF ESIC returns, and other purposes, and only the information should be shared by the employer to the professionals which is relevant. This is an important part. I will not happy to highlight here. Section 42 ESIC recovery. This is very important provisions. कि
if any employee is required to be insured, it should be insured timely. कि अगर दिस क्लियर प्रोविजंस कि कोई भी बेनिफिट ईएसआईसी का जो एम्प्लॉय को मिलना था और ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द एम्प्लॉयर उसको उतना बेनिफिट नहीं मिला या कम मिला या मिला ही नहीं, तो द बेनिफिट्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द ईएसआईसी टू द employee, to the worker, but it should, the capitalized value should be will be recovered by the ESIC from the principal, by the from the employer. So this is very important कि अभी नए जो ड्राफ्ट रूल्स हैं उसमें प्रोसीजर जो अभी एट प्रेजेंट टाइम देयर आर 10 days विंडो कि विद इन 10 days द एम्प्लॉयर विल हैव टू रजिस्टर द एम्प्लॉय, but under the new draft rules, on or before the employment of the employee, which is on which this CSSC provision is applicable, should be registered by the Aadhaar or authentication. So this is very important कि जिस दिन एम्प्लॉय आपका ज्वाइन कर रहा है अगर वो ESIC में फॉल करता है तो ऑन द वेरी सेम डे उसको आधार से आपको उसको एनरोल करना पड़ेगा, इंश्योरेंस नंबर जनरेट होगा और विद इन 30 days आप उसकी डिटेल्स को अपडेट कर सकते हो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कोई भी एम्प्लॉय इंश्योरेंस से रह जाता है, there are any mishappening and ESIC will have to pay, then it will recover from the employer. और एकदम ताजा अंदर This is the important duties under section OSH code. This is the important issue letter of appointment. तो अपॉइंटमेंट लेटर का जो प्रोविजन है यहाँ एम्प्लॉयर को बड़े प्रिकॉशन रखना होगा सर कि जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर्म अंडर द सोशल सिक्योरिटी कोड्स एंड OSHWC कोड. सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट हियर कि जो इंफॉर्मेशन आपका एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है तो वो यू विल हैव टू अपडेट द इंफॉर्मेशन विद इन अ टाइम स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट. if you don't freeze the data, if you don't freeze the information, you don't review the existing system, तो जब जो पीरियड नोटिफाई होगा, when the period will be notified, the existing employer will have to update the data. तो डेटा को जो अपडेट करेंगे तो उसके लिए आज 31 मार्च 28 फरवरी यहाँ डेटा को रिव्यू करना चाहिए और उस जिससे कि जब इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन जो अपडेट करनी होगी पोर्टल पे वो प्रॉपरली हो सके. अदरवाइज इट मे बी कॉन्फ्लिक्ट, इट मे बी चेंजेस in the information. I think this is from my side. I will be happy to if there are any further any questions. Thank you for patiently hearing. Thanks, sir. On behalf of the organizer, I extend my heartfelt thanks to CA Sunil Kumar ji for delivering such an insightful and informative session on new labor codes, IBC interface, DPDP Act, and other miscellaneous provisions. Your clear explanation and practical insights have greatly enhanced our understanding of these important and evolving areas of law. Thank you, sir. Thank you, Emaji. Thank you. Now I would like to welcome our second speaker, CA Ayush Sahane, sir. He has completed multiple exams and courses like forensic accounting and fraud detection, exam by ICAI, and has diploma in information system audit. He has also delivered multiple sessions in internal audit and GST and was also invited by CII, FICCI, government departments for lecture on GST and income tax competencies. Now, not much taking time, I hand over mic to Ayush sir. Thank you so much. First of all, CPE committee led by CA Satish sir for giving me this opportunity of deliberating on today on this very important topic. Thank you so much, Hemant ji, for the elaborate and very gracious introduction that you have given. So, further much thanks to the entire team of CPE committee for organizing such a well thoughtful webinar which is need of the hour. First of all, today we will be covering a topic which is very important as of now: the various income tax provisions, what all amendments have occurred as far as the budget 2026
is concerned. As we all know, the CAs have been considered as the experts as far as income tax is concerned. We are supposed, and conventionally, the income tax has been the backbone of CA practice. So it is very well expected from us that we are masters of this act, and any changes which happen in it, we are supposed to know it and master it. So we will be covering what all changes have occurred, although most of us know that majority slabs and everything, they are the same. But we'll get into the nitty gritties, and also another topic that we are supposed to that I'll be covering upon is how to effectively reply to notices. Okay. So although I know that these two topics in itself are quite lengthy, and it won't be possible for me to deliver each and everything in 1 hour, but I will try to do justice. First of all, budget being very important, we'll cover it first, and then we'll switch to our income tax notices. So I'll share my screen so that you can see the PPT. I would like to happy there are 800 participants presently watching this webinar. Hemanji, is my screen fully visible on full screen? It's fully visible now, so I can go ahead with this. So okay. So in this 93rd CPE committee's webinar, so we'll cover the what all income tax amendments and what all provisions have changed in the budget 2026. So we'll start with a very अभी I guess कुछ लोग थोड़े बहुत मतलब एनर्जी उनकी हाई करने के लिए I'll quote a phrase from a very learned poet, Shri Harivansh Rai Bachchan ji. He has written that मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है. वृक्ष होता है पेड़, ठीक है. मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर मिट्टी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है. मिटने वाला मैं नाम नहीं, तो मुझको कब तक रोकोगे. तो ये फ्रेज हमारे सीएस के लिए बहुत एप्लीकेबल है कि सीएस have survived, have thrived in the various adverse circumstances. They are built in inbuilt होता है उनमें कि circumstances adverse और harsh circumstances को ये जो में सर्वाइव करना और थ्राइव करना फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ हमारे प्रोफेशन में हमें सिखाया जाता है फ्रॉम आवर एकेडमिक जर्नी, एंड देन आफ्टरवर्ड्स आल्सो हाउ टू सर्वाइव. एंड अकॉर्डिंगली जैसे पोएट ने भी कहा है, हम वो पेड़ नहीं है जिसको आराम से सब चीजें मिली, आराम से पानी मिला, हमने बंजर जमीन में रह के उसमें से अपना जीवन निकाला है और उसमें हम सर्वाइव किए हैं. तो एज वी ऑल आर सर्वाइवर्स, एंड one of the most important one of the most important foundation of our survival is our knowledge. जैसे हम अपने आप को कॉन्टिन्यूटी में अपने आप को अपस्किल करते रहते हैं, और सीपी कमिटी का तो धरोहर ही यही है. ये आई वुड से दिस सीपी कमिटी इज द मदर ऑफ ऑल कमिटीज इन द इंस्टीट्यूट, एंड ये हमें इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस as chartered accountants to survive, that we should be abreast with all the new changes which are happening around us. So kudos to the committee for organizing all such webinars which they do every month, every matlab, I would say week. And kudos to them, and thanks to them for organizing so much sessions for upskilling our professionals. So we'll come towards the act. So in today's agenda, we'll be covering the new Income Tax Act 2025, overview what all changes regarding the updated returns have come, assessment and reassessment procedures, what all have changed, tax rates and slabs, and likewise safe harbor rules. So as we all know, no major revision
in basic exemption limits or tax slabs has occurred. So Nirmala Sitharaman, the Honorable Finance Minister, has categorically stated that the existing income tax structure will continue for the financial year 26-27, which is the assessment year 27-28. This means that the both old and new regime will retain as such. जिस जो उनकी existing limits हैं वो ही रहेंगी, उसमें कोई major changes कुछ भी नहीं आया है. तो एक और अब जो अपडेटेड रिटर्न्स भरने की हमें जो मिलती थी, तो उसमें द एक्ट हैज अलाउड अस कि असेसमेंट ईयर के एडिशनल इनकम वी कैन फाइल द आईटीआर यू फर्स्ट ईयर का अगर है 1 साल तक तो विद 25% एडिशनल टैक्स, ईयर 2 का है तो 50%, और 3 और 4 का अकॉर्डिंगली 60 और 70% एडिशनल टैक्स पे करके हम अपनी आईटीआर भर सकते हैं. ये जो एक मेजर कुछ मतलब 4-5 आई वुड से 4-5 आइटम्स विच आर मेजर चेंजेस एंड विच इम्पैक्ट द टैक्स टैक्स असेसमेंट्स एंड जिसका एक इम्पैक्ट रहेगा हमारे प्रैक्टिस में और डे टू डे के कहते हैं जो कंप्लायंसेस में. तो वो 4-5 चीजें हैं जिनका इम्पैक्ट रहेगा. तो इट इज वन ऑफ दोस दैट budget 2026 has introduced several compliance friendly changes. तो सबसे पहले एक्सटेंडेड रिवाइज रिटर्न विंडो. जैसे वी ऑल न्यू कि मतलब कि हमें 31 दिसंबर तक भरनी होती थी अपनी रिवाइज रिटर्न भी, उसके बाद हमें कोई टाइम लिमिट नहीं मिलती थी और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था. देन वी हैव टू गो फॉर आईटीआर यू, और उसमें वो साथ में जैसे 25% और टैक्स पे करके वी हैड टू फाइल इट. बट नाउ अ वेरी वेलकम स्टेप हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड where they have extended the time limit for filing revised income tax returns up to 31st March. So many times assessees, due to their book of accounts are not compiled, there many things haven't happened, so tend to they tend to they couldn't file it, or they tend to lose the time window. But now the window has been increased, and up to 31st March of the assessment year, instead of 31st December, we have been given time to file the revised return. So no interest on another important thing, no interest on penalty during appeals. So many a times we all know कि जब कमिश्नर अपील्स के बाद CIT appeals, JCIT appeals, we file on NAFAC, National Faceless Appeal Center appeals, but the penalty interest on penalty goes on accumulating, and by the time the case is disposed of, the interest itself is humongous amount, and which is also not from not good from the revenue point of view also, because it is giving them a vague and incorrect version of what all is amount collectible from the government. So it is a very welcome step that interest is not levied during the appeals, because in penalty provisions of like section 271 subsection 1 clause C, and likewise many other penalty provisions. So we are they are levying the allegations on the taxpayer, on the assessee for misrepresentation of income, or like suppression of facts, fraud, and what all not. But during the process when the appeal is pending, now interest will not be charged. It is very good amendment that they have done, and we totally welcome it. So also in the budget it has been specified that there will be ease of filing and further simplified forms. So we look forward to it, how the forms will actually, the JSON files will come on the portal, and accordingly we'll respond to it. Rationalization of tax on unexplained income. So unexplained income, so many of us have been dealing cases of unexplained income, especially the professionals who are into practice of primarily income tax might be knowing that we have got n number of cases of demonetization era, where unexplained income and these things are a major issue, and the JAO or FAO, जो face your assessing officers, they
try to invoke section 115 BBE 69 68 on all those when they couldn't when the assessee couldn't I would say explain then from where they have got the money, from where the cash deposits have occurred, from where these cash loans and all of these amount have come. But the government has and also these litigations have been going on like for eternity, and the tax implication and the demand standing on account of these unexplained incomes have been huge. So it is a very welcome step that the finance minister has now reduced the tax rate on unexplained cash credits, investments, expenditures from effectively it earlier used to be 60% plus surcharge plus cess. So on an average, it would range around 78%. So now it has been reduced to effective rate of 39% under the amended law, which is very welcome, which is a very good step uh, by the finance ministry, by the government, so that if people who can't explain many times, especially in I would say backward areas, in village areas, in areas which are not that affluent and which don't have that much access to financially are not that financially literate. So to them it is very difficult to explain it. They haven't gathered those kind of evidences and all. For them it is a and they couldn't explain it, and facing assessing of how, and he has no other option but to apply the applicable tax rates. So these this amendment will be very helpful for especially for those cases where in kind of I would say backward areas, where due to lack of evidences, due to lack of corroborative documentation, the assessee had to suffer. But now 39% is still a big relief for those kind of assessees. Specific penalty provision, unexplained income are now subsumed under misreporting provision, generally attracting a higher penalty provision, but with various other routes which have been mentioned in the new act. Am I visible? Yes, yes. So STT, it is another बहुत important, ये जो एक one of the major things of the budget, and due to which I would say market बहुत ज़्यादा impact होगी. जो market पे इसका market had to face a really good amount of brunt because of this change. तो STT security transaction tax, uh, earlier it used to be 0.02% in case of future contracts. It has been increased to 0.05% of the traded value. And similarly, STT on options has been increased from 0.10% to 0.15%. So it is, I would say, a major blow to the trading community, the people who are trading, and all those trading houses. So it is a very big and market all accordingly responded to it. So it will impact all the active traders, and government has because in earlier budgets also they have given major reliefs of up to 12 lakhs, they have given rebate and so forth. But I would say they have tried to create a balance by introduction of this amendment. So as on date, the as per budget in the bill, they have proposed the increase from 0.02% to 0.05%, and similarly on options also. So TCS. So TCS,
Another welcome step and another one of the major amendments in the current budget. The budget proposes to rationalize the TCS rates on the various foreign remittance and other receipts, lowering upfront cash outflows. So overseas remittance, as we know, majorly education and medical treatment clay, if anybody is going, so reduced, the TCS rates have been reduced from 5% to 2%. And accordingly, earlier the overseas tour package, if earlier 5% and above 10 lakhs it used to be 20%, now it has been rationalized to a blanket 2%, which is a very welcome step. And the foreign travels, whether it be your education, medical travels, and your other tours, tourism to foreign countries, will receive a very welcome. This industry will benefit from this amendment, as the rates have now been rationalized to 2%, which is a very welcome step. TCS further state-based collections, sale of alcoholic liquor, minerals, scrap. So TCS has been raised to 2%. Earlier, it was varying from 1% to 5% depending upon the item. Now it has been rationalized to 2%. So the TDS, no broad sweeping rates revisions have been occurred in it, but a PAN-based TDS for non-resident transaction. When a resident buyer purchases property from a non-resident seller, the TDS is not deposited using the buyer's PAN challan, and TAN is not required. So it is a very procedural correction has been done, which was required from a long time, and we welcome it. The TDS clarification on manpower supply. As we all know that the earlier in manpower there used to be lot of I would say controversies. There used to be lot of confusion amongst the various assessees and the taxpayers and the professionals regarding what all rate will be applied on manpower supply. Some used to say that if the manpower supplied is professional, then you need to charge 10% under 194J. If they are skilled, then under JB you need to deduct 2%. Then so forth. There was a lot of confusion and around it, and they used to be very much representations for the clarification on this point. So on this they have clarified that TDS on payments of manpower supply services is 1% if pay is individual, and 2% if pay is any other entity like company, partnership firm, and so on. So it is very welcome said. A good clarification has been done by the finance ministry. This reduces various disputes, especially even department was also not clear so as to what kind of people were receiving short deduction notices from the ITO TDSs and DCIT TDS. So it's a very good step which the government has brought. New and streamlined nil and lower TDS certificate process. So under the Income Tax Act, which will be applicable from, as we all know, from 1st April 2026, taxpayers can apply for nil and lower TDS certificate using a simplified form, reducing the procedural burden. We all know that earlier, for if you want to apply a LDC or a lower deduction certificate or a nil deduction certificate, they used to be a humongous task, and really we had to run from pillar to post. But now in the new act, government has proposed to make a very simplified form for getting a nil deduction certificate, and we welcome it, and we look forward to what kind of form will now be available from 1st April onwards on the income tax website. So updated, this is also very good step that taxpayers can now revise their return even after reassessment proceedings have initiated. So if anybody's account, anybody's case has opened under reassessment proceedings, they have received 148, 147 proceedings are going on under your faceless 144B. So in such cases, with payment of additional 10% tax rate over the relevant year rate, you can easily update your returns, and
due to this, it will simplify the proceeding and reduce the litigations, and EO has to rely on the updated returns, and it is said that the new return will fill into the shoes of the previous returns. It is a very welcome step when many times we see that especially in the rural areas, in the not so financially I would say aware backward regions, the many people get their returns filed from not professionals, and they tend to do come some kind of I would say uh, error while filing the idea. But this will bring a major relief major relief to those taxpayers, because when their case proceedings get um, started, then they reach out to CAs, to professionals, for getting their things corrected and fighting the cases. But at that time, the water had already flown under the bridge. So but now it is a very welcome step that after by additional 10% tax payment of tax, you can file updated return. Implementation. So as we all know, the finance honorable finance minister has clearly said in her budget speech that effective date for application of the new uh, act, as well as the rules and forms, uh, are being notified shortly. The effective date will be 1st April 2026. The draft rules are all, as we all know, already online, and even on institute's website also we can see draft rules, and we can give our feedback on them. And the last date for feedback is 22nd Feb 2026. So our key takeaways from this budget is the 2025 act will bring a modernized, easier returns, easier forms. From 1st April onwards, updated returns are we quite welcome the compliance relief that has been brought, simplified TP returns, and especially the TCS, TDS, and the revised return amendment that has come. So now we come to the next part. uh, the next part, which is also one of the very important parts of today's webinar: how to effectively reply to income tax notices. So we all know that majorly there are three type of notices that you are receiving: section 143 subsection 1, your intimations; section 143 subsection 2, your scrutiny returns; and your 148 notices. So when you receive your notice, what all you need to see, how you need to process it, how what all notes you need to take care of, what all working that you need to do, will cover in it. So first of all, check the section under which income notice is being issued. What are the assessment year involved, is then mentioned over there or not? Time limit kitna hai response karne ka? Mode of compliance, is it e proceedings? These small things are very important as far as adjudication, as far as the proceedings are concerned, because even a small glitch or small lapse on the part of department in any of these things can quash the proceedings. So if the assessment year is time barring, if the period has already lapsed, then also the proceedings are bound to be quashed. If din is not mentioned, then also it is an invalid notice and it is to be quashed. So accordingly, there are many technical grounds. Facts and figures are a separate thing, but many technical grounds on which we need to be very uh, upskilled, we need to be very aware, so as to we can properly file the reply. So identify the core issue. So first of all, we need to see the mismatch in AIS 26AS. So
first of all, we need to identify the core issue. What is the mismatch in whether it's a mismatch in AIS 26-year AIS values, TIS value, high value transaction. रीजन क्या है, किस रीजन से ये जो मिसमैच है, किस क्या रीजन क्या है जिसके कारण ये जो हमारा नोटिस है ये आया है. So first of all, we need to identify the root cause of the notice. Whether it is high value transaction, unexplained cash deposit हुआ है, डिफरेंस है टर्नओवर में, हमारा जो आईटीआर की टर्नओवर है वो कुछ और है और जीएसटी की टर्नओवर कुछ और है. हमने जो कोई डिडक्शंस क्लेम की है, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनको क्वेश्चन करा है, उनको चैलेंज करा है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू, जैसे हमारे पास एक नोटिस आता है ना, वी नीड टू स्टडी इट थॉरली. हमें देखना है कौन कौन सी चीजों पे इट इज क्वेश्चनिंग, कौन सी एलिगेशंस लगाई जा रही, कौन सी चीजों को चैलेंज किया जाना है, एंड अकॉर्डिंगली वी नीड टू हेड टुवर्ड्स रिप्लाइंग इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे पहले मैंने बोला, एक तो आपका सबसे पहले आपने टेक्निकल ग्राउंड देखने हैं. क्या नोटिस में डिन है, क्या नोटिस प्रॉपर चैनल से आया है, क्या प्रॉपर ई प्रोसीडिंग्स वगैरह हुई है, क्या नोटिस में जिसने इशू किया है ऑफिसर ने उसकी जुरिस्डिक्शन है ऑफिस क्या कहते हैं उसकी, ये जो है ये नोटिस इशू करने की. व्हाट वर द ग्राउंड्स फॉर इशूइंग ऑफ सच नोटिस, क्या उसने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल जो लेना था क्या उसने वो लिया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी द टेक्निकल ग्राउंड्स, देन वी नीड टू गेट टू द nitty-gritties. Okay, so then when we go to the actual we actually receive the income tax notice, then we need to understand it thoroughly कि क्या इसमें क्या चीज थी जो जिसका लैप्स हो गया, किस चीज के कारण हमारा ये नोटिस आया है और क्या एलिगेशंस लगे हैं. तो उसमें thoroughly हमने AIS, TIS, 26AS और जितने भी हमारे फॉर्म्स हैं उनके साथ अपनी आईटीआर को वेरीफाई करना है. जीएसटी की हमारे जो पोर्टल की जितने भी इंफॉर्मेशन है, वी नीड टू thoroughly compare them and see what all was shortcoming that has led to this notice. So then we need to कलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है. फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने कोई, जैसे आप पे एलिगेशन लगाया है कि आपकी टर्नओवर का, जैसे फॉर एग्जांपल बड़ा इनका सबसे मैक्सिमम एक इजी थिंग व्हाट दे डू इज दे चार्ज एलिगेशन दैट बैंक स्टेटमेंट में जो क्रेडिट्स हैं वो बहुत ज्यादा है, एंड आपके जो इनकम टैक्स की आईटीआर में आपने जो बैलेंस शीट वगैरह अपलोड कर रखी हुई है, या टैक्स ऑडिट में जो आपने ऑडिटेड बैलेंस शीट अपलोड या केनल जो अपलोड किया हुआ उसमें टर्नओवर कम है और उसमें ज्यादा है. तो यू नीड टू get all the documentary evidences, whether it be bank statements, GST returns, your form 26AS, AIS, TIS, all the agreements, invoices, confirmations, you need to get it. So you need to collect all the documentary evidences. बैंक स्टेटमेंट्स कलेक्ट करनी है, जीएसटी रिटर्न्स कलेक्ट करनी है, और उसमें जैसे कि मेजरली मैं आई विल टेल यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट 7-8 years फ्रॉम replying to such notices, मतलब almost daily I am preparing a reply of one or more notice. So इसमें आप you need to see, जैसे कि वो बोलते हैं कि अगर बैंक में आपके जो क्रेडिट्स हैं वो आपके बहुत ज्यादा है और आपके इनकम टैक्स की और जो आपके पीएनएल में है, ऑडिटेड पीएनएल में वो क्रेडिट कम है, तो उसका पूरा रिकंसिलेशन बना के दीजिए. उसमें दीजिए कि उसमें जो है टैक्सेबल वैल्यू आई हुई है, और जो बैंक अकाउंट में पैसा आया वो जीएसटी का पैसा भी उसमें इंक्लूडेड है, बैंक अकाउंट में कॉन्ट्रा एंट्रीज भी आई हुई है, बैंक अकाउंट में अनसिक्योर्ड लोन भी आए हुए हैं, बैंक अकाउंट में इंटरफर्म जो आपके हैं, जो आपकी खुद की फॉर एग्जाम्पल एक इंटर बैंक ट्रांजेक्शन है ऑफ द सेम एंटिटी वो हुई है. So you need to prepare a thorough reply with a proper reconciliation and calculations. अगर आप ऊपर ऊपर से देंगे, सिर्फ लिख देंगे पैरास, वो नहीं होता. As a CA, since we are privy to their accounts, we are privy and we have the expertise in numbers, then they the department also expect from us कि हम proper उसको एक proper presentation देंगे, proper tabular form में, proper ये जो है नोटिंग करके इस चीज का बताएंगे. तो अकॉर्डिंगली वी नीड टू इन्फॉर्म देम कि उसमें क्या रीजंस क्या थे जो डिफरेंसेस के. कोई भी अगर एलिगेशन फॉर एग्जांपल, एक तो देखो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा, क्वेश्चन ऑफ आपका लॉ होगा. क्वेश्चन ऑफ लॉ में तो आपका
वो चीज हमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उसके पीछे क्या स्टैट्यूटरी व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द जुडिशरी, वेदर इज देयर एनी प्रेसिडेंट एक्ट में या कहीं और किसी कोर्ट ने, आपकी जुरिसडिक्शनल कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने उस केस पे ऑलरेडी हैव दे गिवन एनी वर्डिक्ट, then you need to study it thoroughly and then you need to quote it. Then we come to the GST returns. GSTR 1 and 3B. Your form 26AS AIS reconciliation. So 26AS में अगर फॉर एग्जांपल बड़ी बार हमारा क्या होता है कि 26AS में हमारा जो क्रेडिट्स होते हैं वो बहुत सारी और बहुत फालतू इन्फॉर्मेशन में दिख जाती है, उसमें बहुत सारे अलग अलग जगहों से आते हैं, वो बहुत बारी डबल हो जाता है। जैसे अभी कुछ पिछले दिनों काफी पोस्ट ऑफिस के या फिर कुछ की डुप्लीकेट एंट्रीज भी दिख रही थी इसमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू तो वहां से जाके उसको रिजेक्ट कर दो एंट्री को, इफ द टाइम लिमिट और जो भी उसकी है इज स्टिल लाइफ, तो उसको रिजेक्ट करो। इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन यू नीड टू प्रिपेयर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर एविडेंसेस, टोटली disagreeing to what is being shown on the 26AS AIS और TIS। अगर 26AS में है तो आप उसकी करेक्शन करवाइए। जो कंसर्न डीडीओ है, अगर ये गवर्नमेंट्स की पेमेंट्स आई हुई है या फिर कंसर्न जो भी क्या कहते हैं उनका वेंडर है या कोई सप्लायर है जिसने वो एंट्री शो कर रखी हुई है एंड इट इज रॉन्ग, बड़ी बार वो उनको पेमेंट्स ग्रॉस में दिखा देते हैं इंस्टेड ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, जिससे कि सामने जो असेसिंग ऑफिसर है उसको तो लग रहा है कि जैसे कि एक अगर वो बंदे की टर्नओवर है 1 करोड़ की दिखाई है, उसमें उसमें जीएसटी इंक्लूड करके 1 करोड़ 18 लाख की टर्नओवर दिख रही है। तो असेसिंग ऑफिसर इज वेरी राइट इन टेलिंग कि भाई आपको यहाँ से आपके 26 AS में तो 1 करोड़ 18 लाख दिख रहा है और आपने अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की हुई है। देन यू नीड टू ब्रिंग द फैक्ट्स टू ग्राउंड। आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाने हैं कि सर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ये था, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये 1 लाख रुपए था और ये जीएसटी का अमाउंट है, और ये चीज उन्होंने बाय मिस्टेक दे हैव shown it। and अगर if possible you have the correction is not being done, तो then वो जो concerned person से आप एक सर्टिफिकेट ले आओ कि there is a mistake in filing of returns and this is the actual amount that has been given to him and this is the GST amount। So you need to collect the agreements, invoices, all the confirmation, जितने भी agreements है, for example contract हुआ है, enter हुआ है, किसी भी अगर corporate के साथ आपका contract हुआ है, कोई भी invoices है, अगर कोई जैसे कोई कोई bills है, कुछ खर्चे disallow कर रहे हैं आपके, some expenses of yours they are disallowing them, they are adding back, then you need to get you need to collect those invoices, original, preferably the properly scanned original invoices, and then upload it so as to counter the allegation which is being charged by the department। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, आपका जो भी ये जो है एविडेंसेस है corroborate करने के लिए, वो इन इन फुल आपके पूरे में यहाँ पे आपके पास तैयार हो, तभी आप एक इफेक्टिव और एफिशिएंट रिप्लाई दे सकते हैं जो कि माना जाएगा विच विल बी एक्सेप्टेबल टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। So you need to first of all reconcile before replying. Reconcile your AIS, your books, reconcile 26AS and TDS claims, your turnover reconciliation, your capital introduction and loan confirmation. You need to reconcile each and everything। कुछ भी रिप्लाई करने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप उसकी प्रॉपर रिकंसिलिएशन कर दें, क्योंकि अगर आपकी रिकंसिलिएशन नहीं है तो आगे जाके अगर आपके खुद ही अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है, टीआईएस में कुछ और दिख रहा है, 26AS में आपकी बुक्स में कुछ और दिख रहा है, आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट में कुछ और है, टीडीएस वो जो आईटीआर में कुछ और ही दिख रहा है, तो ऑब्वियसली litigations are bound to happen। So first of all, before giving any reply to the proceedings, before giving any reply, you need to be very clear from your end regarding what all why the differences have occurred, and you need to reconcile them and prepare proper statements।
सो इन सर्टन केसेस वेयर, जैसे मैंने पहले ही बोला कि टर्नओवर में अगर आपका इशू है, टर्नओवर आपकी जीएसटी और आईटीआर में डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो क्या रीजन है, उसमें जीएसटी एडेड है, उसमें कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट्स हैं, उसके एविडेंसेस डेबिट नोट क्रेडिट नोट के आप लगाइए, उसमें जो जीएसटी के रिटर्न्स हैं वो एविडेंसेस लगाइए, आप साथ में एनुअल रिटर्न है वो भी लगाइए, ताकि आप जो भी आप आपने चीज क्लेम की है आईटीआर में उसको आप जस्टिफाई कर पाओ। देन काफी अनसिक्योर्ड लोन होंगे या कैपिटल इंट्रोडक्शंस की होंगी आपने, तो उसके लोन कंफर्मेशन, जो फॉर एग्जांपल आपको अनसिक्योर्ड लोन किसी ने दिया है तो उसका प्रॉपर बैंक से आपका बैंक की एंट्री का प्रूफ आ जाएगा। आप एफिडेविट ले लीजिए जो जिस पर्सन ने आपको लोन दिया उससे। सो some tips for drafting an effective reply. So be factual and precise. So रिप्लाई पॉइंट वाइज टू ईच क्वेरी। अगर उसमें ना जैसे मेनी टाइम्स आई हैव सीन द रिप्लाईज, काफी जो मतलब कि काउंसिल से मेरे पास आते हैं या फिर किसी और का केस हुआ होता है, तो आई हैव सीन मतलब कि एक डिटेल जैसे क्वेश्चनर जो रेज करते हैं डिपार्टमेंट से, फॉर एग्जांपल अगर स्क्रूटनी में या फिर 147 की प्रोसीडिंग्स में, तो उसमें जो रिप्लाई है, एक आपने आपको अगर 25 पॉइंट्स पूछे, 15 पॉइंट्स पूछे, तो आप उसका क्लब करके रिप्लाई दे रहे हो, एक पैरा बना के दे रहे हो, तो मतलब कि दोज रिप्लाई आर अनसस्टेनेबल। वो कोई भी, व्हाई विल द ऑफिसर टेक द इम्पेटस ऑन हिम, अपने पे क्यों लेगा, व्हाई विल ही बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आई वुड से फैक्चुअली एंड लीगली फ्रैक्चर्ड रिप्लाई, जो कि एक रिप्लाई जो टीनेबल नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी ऑफिसर नहीं लेगा। यू नीड टू इंश्योर दैट द रिप्लाई इस पॉइंट वाइज, जो एक एक क्वेरी है हर एक की क्वेरी के सामने उसका रिप्लाई हो। सिंपल से आप समझ लीजिए, आपको एग्जाम का पेपर आया है, उसमें अगर आपके 15 क्वेश्चंस हैं, आपने 15 क्वेश्चंस का हर एक का अलग रिप्लाई प्रॉपरली ड्राफ्ट करके लिखना है। आप ये नहीं लिख दोगे जी एज अबव। क्या कभी आप पेपर में ऐसे लिखते हो कि ये क्या कहते हैं, जो अगर फर्स्ट पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट और थोड़ा बहुत रिलेटेड आप लिखते हो एज कवर्ड अबव, या फिर एक पैरा में सारा का सारा कवर कर देते हो सारे क्वेश्चंस को, तो दैट इज नॉट टीनेबल। इट मतलब इट डजंट लुक गुड। अगर आपको भी कोई ऐसी रिप्लाई को असेस करने के लिए करेगा, तो एंड वेयर यू हैव सो मेनी केसेस डिपार्टमेंट में, सो मेनी केसेस आर पेंडिंग, सो वी शुडंट कीप अनजस्ट expectations from the income tax officers also and income tax department, that they would appreciate and accept such kind of replies. So we need to submit proper point wise reply, attach proper evidences which with each of them, avoid emotional language। why I don't, ये जो हमारा जितना भी हमारा जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, ऑल ऑफ दीज, ये these are on the basis of facts and figures and law, so you stick to it। why are you काफी I have seen councils and sometimes taxpayers have written during the assessment proceedings. I have got the case in appeal proceedings. In assessment, they have written all kind of things. They have written n number of paras. I am suffering from this and this. I am suffering from this and this. But भाई बताओ तो why was the difference? एंड इफ दे वर, उसको जब तक एक्सप्लेन नहीं होगा, वो उसको वो अनएक्सप्लेन इनकम रहेगी ना। आपको ठीक है, आपको प्रॉब्लम थी, आप हॉस्पिटलाइज थे, आपको कोई रिलेटिव हॉस्पिटलाइज था, आपको कहीं किसी की मैरिज किसी की आ गई, वहां पे जाना पड़ा, कोई भी चीज है, आपके नंबर ऑफ रीजंस, आपके कोई किसी की उधर डेथ होगी, ठीक है, आप इमोशनल आपने लंबे चौड़े पैरास लिखे हैं, बट जो एलिगेशन लगा रहा है उसको लीगली रिप्लाई तो दो कि उसका क्या रीजन था, उसमें दिस सो एंड सो वाज अ डिफरेंस एंड इसकी रिकंसिलिएशन ये है। You have resorted to each and everything but the main thing that you have ignored. So these kind of things, I don't, I would encourage all the my professional colleagues to not to resort to such kind of language, because the assessing officer is looking for a proper concrete reply which he can rely upon. सो कोर्ट रेलेवेंट सेक्शन एंड केस लॉस इफ रिक्वायर्ड। सो जितने भी रेलेवेंट सेक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल अगर रिसेंटली आई वाज
I was appearing for a case, and in that the assessing officer had alleged that the person had received so and so amount of rental income, जबकि उसका कोई रेंटल दिया ही नहीं था. हाँ, तो उसमें प्रॉपर सेक्शंस कोड करो. सेक्शन 22 में आपने हाउस प्रॉपर्टी में किया है, बट दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ माय पर्सन, माय क्लाइंट, दिस इज ऑफ द एसएससी. उसमें उसको क्लियरली मेंशन है कि ही वाज रेंडरिंग कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज एंड नॉट रेंटल सर्विसेज. और corroborative एविडेंसेस प्रोड्यूस कीजिए और एग्जैक्ट सेक्शन को कोट कीजिए. एंड देन कम्स अबाउट केस लॉ. केस लॉ में हमने देखा गया है कि केस लॉ में people what I have seen that councils are nowadays uh, resorting to use of chat gpt, AI and all of those things. Sorry, the phone was ringing, so just put it on silent. So where were we? You need to quote the relevant sections. For example, अगर आप कहीं पे पर्सन का अगर कोई रेलेवेंट उसकी सेक्शन है, कोई अगर वो आपको किसी सेक्शन में बोल रहा है, सेक्शन 69 में, सेक्शन 115 बी में, सेक्शन 271 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी में, या किसी भी सेक्शन में अगर वो आपको एलिगेशन लगा रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दैट सेक्शन कंप्लीटली. पहले तो वो पूरी सेक्शन आप पढ़िए, फिर उस सेक्शन पे जो केस लॉस हो रखे हैं वो सारे डिटेल्स में पढ़िए. आपका, मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम आपका सोल्यूशन तो वहां से निकल जाएगा. लोग सेक्शन पढ़ते हैं नहीं, उसका कुछ और रिप्लाई दे रहे विच इज नॉट पर्टिनेंट टू व्हाट हैज बीन आस्क्ड बाय द डिपार्टमेंट. सबसे पहले वो सेक्शन पढ़िए कि वो जिस सेक्शन में आपको बोल रहे हैं कि आपने इस सेक्शन की नॉन कंप्लायंस की है, यहाँ पे आपने जो एक्ट को क्या कहते हैं ओवररूल किया हुआ है, यहाँ पे आपने जो कंप्लायंस नहीं कर रखी हुई है, पहले वो सेक्शन पढ़िए, फिर अकॉर्डिंगली उसका रिप्लाई बनाइए. केस लॉस again, as I was saying earlier, I've seen many of assessees, they are resorting to case laws by looking at chat gpt. आपको, one of my counsels, they had I would say very hilarious and very funny encounter with this chat gpt reply. So one of my friends, colleagues, he was appearing before the department for a case, and he had resorted to got made the entire case from chat gpt, and the chat gpt had mentioned n number of case laws on it. But when the officer got to ask where are these cases, he's also if the if the council is mentioning, he's the department has also an inherent respect for CAs and councils. So he also believes that अगर इसने लिखा है तो he must have applied some mind, and उसमें सोच के वो citation को search करके proper उसके पास record होगा. तो he searched all the case laws which he had cited. So to his amazement, none of the case law was uh, there in there was none of such cases, none of such verdicts, none of such judgments were there on earth. So he searched each and every case law. वो सारे के सारे मनगढ़ंत थे, were the figment of imagination of chat gpt. They didn't existed. Chat gpt, as per my experience, is trying to make you happy. If you are saying this and this is my case, and these are the allegations, he'll say you, why are you worrying, इसमें तो इतने सारे जजमेंट्स हैं, यू कोट दिस जजमेंट, बट उनकी कोई रेलेवेंसी नहीं है. तो प्लीज, जो अभी आप कोई केस लॉ कोट करते हैं, you as a counsel, you are also, you have to uphold dignity of this esteemed profession. So please उसको पहले सर्च कर लीजिए, अपना पहले होमवर्क कीजिए, उसको प्रॉपरली देखिए क्या उसकी साइटेशन पे एक्चुअली कोई वर्डिक्ट है, उसकी वर्डिक्ट की कॉपी, ऑर्डर कॉपी अपने पास रखिए. कल को कोई वो पूछता है तो आप उसको भी अपलोड कीजिए.
अगर आपके पास खुद ही नहीं है, वो तो वैसे ही आपका देखिए, जब उसको मिलेगा कुछ नहीं, नेक्स्ट हियरिंग पे आपको पूछेगा ये सब आपने जो बोला, ये सब मैं कहा, ये तो इस चीज का कुछ है ही नहीं, तो फिर आपके केस पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा उस चीज का। तो इट इज रिक्वेस्टेड टू प्लीज go through the citations in detail and then you cite them. Mindless citing of chat gpt and this Gemini AI case laws, I don't think so is okay. I would agree, जैसे this is the era of AI, artificial intelligence, but at the same time we need to, human intelligence is irreplaceable. When it is quite apparent that a certain, और ऐसे ऐसे वो strategies बोलता है कि करने के लिए, which is quite, मतलब it's clearly visible, it is an open and shut case, but people resort to those replies, and god knows why they resort to such things. But we all must use AI. Artificial intelligence does increase the time of our reduce the time of our work, increases our effectiveness, efficiency, but at the same time we need to apply our mind. Many times councils write कि there has not been a proper application of mind by the assessing officer. So are we applying our mind while preparing the replies? We also need to introspect as chartered accountants, as councils. We also need to introspect, are we applying our mind while making these drafts, while making these replies? If we are just mindlessly relying upon what all chat gpt and all these AI platforms have to offer, without resorting to it's earlier I used to see that in CA firms there used to be so many Bayer Acts and all of those things, and people used to be even I personally used to be drenched in all of those Bayer Acts and all these ready reckoners and everything. We had flags, everything. So, but now people are just blindly relying on what ChatGPT has to offer. We need to do hard work. As I earlier said, this is a very this CA community is a very hardworking community. This is a very survivor community. So if we have been given so much so importance by the government, by the lawmakers, by the earlier I think so many of the senior CAs also might be listening to this webinar. So they might be knowing that earlier these tax audit and all provisions were not there, but when the government saw how much expertise we as chartered accountants have on the income tax act, they introduced these sections on various platforms that they have introduced CA certifications in the act. They rely on our knowledge, they rely on our expertise, and the hardship we have gone through while doing CA. They respect it. That is why they have relied upon us. So as councils, when we are drafting a reply, we need to uphold to the dignity of the profession. We need to do hard work. If you are not doing hard work for the sake of your own, for your sake of your office, for sake of your own self, but at least for the sake of this esteemed profession, please, I would urge everyone to do good amount of hard work while preparing replies. I have seen so many replies, appeals get rejected. They have, मतलब grounds लिखना नहीं आते लोगों को, grounds मतलब इस तरीके से drafted होते हैं कि जिसमें मतलब कि सामने दिख रहा है कि मतलब कि 12th क्लास का बच्चा उससे बेटर ग्राउंड्स कोट कर सकता है. You need to be very meticulous while drafting the grounds. किस तरीके से आपने ग्राउंड्स में सारी कहानी लिख दी हुई है जो आपको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में लिखनी है. स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में आपने इमोशनल लाइंस लिखी हुई हैं जिसमें, और जो एक्चुअल जो क्रोनोलॉजिकली आपको मेंशन करना है वो आपने मेंशन किया नहीं हुआ. तो आई वुड सजेस्ट द पीपल हु वांट टू एंटर इनटू लिटिगेशन प्रैक्टिस, हु वांट टू draft replies for their clients, so please it is requested to go through the text, go through the various ready reckoners,
there are various n number of various learned authors have drafted have written so many books which are very I would say remarkable as far as drafting is concerned. So please resort to learn as much as you can. और एक चीज मैंने जैसे ये सारा कुछ आई होप सो कि सबको ये सब कुछ समझ आ रहा है. ये सब इफेक्टिव रिप्लाई का ऑल ऑफ दिस थिंग आर आई वुड से वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इफेक्टिव रिप्लाई. ये सब हमारे इससे ही रिलेटेड है. तो प्लीज इसे ये मे बी इस स्लाइड में इस सामने लिखा ना हो, लेकिन बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जब इफेक्टिव रिप्लाईज के लिए आप प्रॉपर स्टडी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम एक दो टाइप की स्टडीज आई हैव सीन ओवर माय एक्सपीरियंस the people do, especially our councils as our professionals do. One is the daily study and one is the need based study. मेरे पास वो केस आएगा, मेरे पास वो सेक्शन टच होगी तो मैं वो पढ़ूंगा, वरना मैं पढ़ाई नहीं करूंगा बिल्कुल भी. It is a very wrong approach. We need to regularly upskill ourselves. We need to regularly, अगर आप कोई भी बड़ा वकील देख लीजिए, कोई भी बड़ा काउंसिल देख लीजिए, how much did study they do, you can see daily they are studying the case laws, daily they are studying the various enactments. अभी तो उनका BNS सब चेंज हो गया है, भारतीय न्याय संहिता कितने एक्ट्स ने आगे, still they are studying all of those things. So if we also want to get into litigation practice, we need to inculcate a habit of daily reading, daily studying. जितने भी एक्ट्स, जितने भी नए कोई सुप्रीम कोर्ट की प्रोनाउंसमेंट आ रही है, अब वो एक्ट को ऑर्डर को पढ़िए. तो पता है ऑर्डर आपको लगता है यार ये मेरे इससे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, तो बड़ा हाई फाई केस है, ये क्या कहाँ मेरे किसी रिप्लाई में आएगा. पता है जब ऑर्डर पढ़ोगे ना आप, उसमें ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने किसी और ऑर्डर्स का मेंशन किया होगा. मैंने खुद अर्लियर आई आल्सो यूज्ड टू फील द सेम थिंग. जैसे मेरे तो केस में मेरे को ये कहाँ टीपी का केस है, ये बहुत फॉरेन कंपनीज का ये सब है, मेरे इसमें कहाँ ये यूज आएगा. या फिर ये किसी भी ये कैपिटल गेन का है, ये वाला कैपिटल गेन का क्लाइंट मेरे पास कहाँ आएगा जो मेरे को इस चीज को इतना मैं इन डेप्थ में पढूं. तो बट व्हाट व्हेन आई रेड इट ना, आई फाउंड कि उसमें काफी ऐसे उन्होंने रेफरेंसेस डाले होते हैं, सेक्शंस को कोट किया होता है, जजेस ने कितनी बारी इतनी अच्छी तरीके से ऑर्डर्स बनाए होते हैं, अलग अलग साइटेशंस कोट कर रखी होती हैं, अलग अलग चीजों पे उनका राय क्या है, हाउ दे कंसिडर सब्सटेंस ओवर फॉर्म. तो एक तो आप उन चीजों को जब जज ने कोट कर दिया ना वो सेक्शन को, तो आप भी कर सकते हो अपने ये जब आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस आई थिंक सो दे वन ऑफ द टॉप मोस्ट एंड ऑनरेबल फिगर्स of our nation. So when they have quoted something, it means a lot. So when you study all of those cases, तो ऑटोमेटिकली आप में भी वो चीजें मतलब कि आप समझते हैं. और जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक केस पढ़ रहा था, तो उसमें किस तरीके से कैपिटल गेन्स का और किस तरीके से डिवाइड हुआ है, एचयूएफ का किस इनकलकेशन था, किस तरीके से ये सब इंटरमिंगल्ड थी चीजें, उसको बड़े अच्छे से डिमिस्टिफाई करके समझाया गया था. So it was very helpful to me when I fought my capital gain cases. Although directly there was no relevance, but indirectly the kind of how they quoted various sections, how they quoted citations, and how their counsel had quoted and got relief. So I got to know about the strategy. Then I just I tried to get the same thing done with my case. So many times when you read the case, कुछ orders होंगे जो कि मतलब शॉर्ट ऑर्डर्स होंगे, उसमें इतना लिखा नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम जो सुप्रीम कोर्ट्स हाई कोर्ट्स हैं, तो उनके बड़े अच्छे लंबे ऑर्डर्स होते हैं, उसमें बड़े अच्छे से उन्होंने केस के ऊपर काफी डिटेल में डेलिबरेट किया होता है और आपको बहुत उससे सीखने को मिलता है. तो आई वुड सजेस्ट अगर कोई एक चीज आप इस वेबिनार से टेक अवे ले, कोई एक चीज सीखे जाए तो ये सीखे जाए कि काइंडली study daily so that we uphold the dignity, uphold the respect our profession has got. Structure of reply. So कोई भी आपका रिप्लाई होता है, सबसे पहले you need to properly give reference to the notice. ये नोटिस कौन सा था,
उसका दिन क्या था, उसकी क्या डेट थी, क्या असेसमेंट ईयर था, किसके रिस्पॉन्स में आप दे रहे हो। ऐसी कोई रिप्लाई थोड़ा ना आप डाल रहे हो। कुछ नोटिस आया है, उसके कोई क्वेश्चनर आया है, किसी this is in reference to notice number this, dated this, by din number this, or for this so and so assessment here for assessee so and so having pan so and so। पूरा रेफरेंस आपका होना चाहिए। अब ऑर्डर में देखो कितने ब्यूटीफुली ऑर्डर ऑफिसर ने पूरा सारा कुछ मेंशन किया होता है, लेकिन हमारे जो काउंसिल्स रिप्लाई लिखती है बस सब्जेक्ट रिप्लाई इन रिस्पेक्ट टू ये 147 प्रोसीडिंग्स, वन लाइनर। फिर व्हाट इज दिस। थोड़ा सा आप भी एफर्ट कीजिए, उस पर लिखिए। अगर वो अब चैट जीपीटी वाले रिप्लाईज तो वैसे ही होते हैं, लेकिन चैट जीपीटी को थोड़ी प्रॉम्प्ट वैसा दे दीजिए कि प्रॉपर इस नोटिस को अपलोड कर दीजिए वहां पे कि इस नोटिस के रेफरेंस में मुझे डिटेल में बना के दो, ताकि और प्लीज अपने उसमें चेंजेस तो कीजिए ही, लेकिन विथ प्रॉपर द एक्सप्लेनेशन शुड बी वेरी क्रिस्प and reply should be very clear regarding what in reference with reference to which notice you have given the reply। सो व्हेन एंड आफ्टर जब हमने रेफरेंस दे दी है उसके बाद प्रॉपर बैकग्राउंड दो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में। शुरू में जब आप इंट्रोडक्शन करें केस का तो बैकग्राउंड दीजिएगा, सेसी का क्या बैकग्राउंड था, क्यों केस की प्रोसीडिंग लगी, कहाँ पे कास्ट में सिलेक्ट हुआ, कहाँ पे सिलेक्ट हुआ, कैसे हुआ, ये जो एसएफटी हुई क्या हुआ इसमें, क्यों ये आज प्रोसीडिंग लगी है, वो सारा कुछ दीजिए। उसमें क्या फिर सबमिशन क्या थे, क्यों अगर क्या अपील स्टेज पे है तो अगर एक्सपार्टे ऑर्डर हुआ या क्या चीज डिसअलाउ हुई, क्या था उस पे आपका क्या पॉइंट था, और उसका प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कहां से स्टार्ट हुआ टू करंट डेट पे क्या सिचुएशन है, वो पूरा क्लियर मतलब अपेरेंट होना चाहिए। फिर पॉइंट वाइज हर एक चीज अपने अपने पूरे जो ग्राउंड रखे हैं पहले उनको दो, फिर हर ग्राउंड को एक्सप्लेन करो। फिर उसमें जो लीगल जो प्रेसिडेंट्स हैं, लीगैलिटी क्या है, सेक्शन क्या बोलती है, एओ ने क्या अलेज किया है, होना क्या चाहिए था, वो सारा कुछ प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन करो। लीगल उसकी लीगैलिटी उसकी, फिर जो आपका मेन बॉडी ऑफ आपकी आगे जो रिप्लाई, उसमें डिटेल में जाके हर चीज को एक्सप्लेन करो। जितने टेबल्स हो सकते हैं वो बनाओ, जितने प्रॉपर वर्किंग्स हो सकती है, जितनी कैलकुलेशंस आप कर सकते हो। प्लीज ये 2 पेज के बेकार रिप्लाईज मत दो, वो डजंट लुक गुड। प्रॉपर उसमें स्टडी करके आप रिप्लाई दो, उसमें प्रॉपर टेबल्स बनाओ किस तरीके से कहां पहले क्या था फिर क्या हुआ, ये प्रॉपरली करके तो, और उसमें अपनी लीगैलिटी पूरी केसेस की बताओ। एंड देन यू रिजॉर्ट टू prayer what you want। So at the end of the my summation I would pray and I would like to conclude by saying that so and so the case may be set aside, so and so proceedings may be quashed, so and so relief may be given, whatever depending upon your notice and proceedings। जो भी है वो लिखो उसमें डिटेल में, वो आपकी प्रेयर में आ जाएगी। पर मोस्टली 4-5 लाइन की प्रेयर्स होती है डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस, पर 4-5 लाइन में क्लियर लिखो बस मुझे मैंने पूरी कहानी ये सुना दी, अब मेरी आपसे ये दरख्वास्त है मुझे ये रिलीफ दिया जाए। तो देन इन प्रेयर दिस वुड कम। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, इग्नोरिंग नोटिसेस, इनकम्प्लीट, जैसे वो तो मैंने अब पूरी आई गेस सेशन में टाइम टू टाइम बड़े सारे आपके मिस्टेक्स जो करते हैं हमारे काउंसिल्स वो मैंने मेंशन किए हैं, बट to add to those I would say incomplete replies, incomplete documentation, contradictory statements, late submission, copy paste generic replies मत दीजिए। कोई भी अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में कोई बात बोली है और आगे जाके आप अपनी बात ही चेंज कर रहे हो, यू आर सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टिंग, दिस शुडंट हैपन। लेट सबमिशन, आपकी ड्यू डेट थी 15 फेब, आप उसको दे रहे हो 20 फेब को, तो आपका पहले ही इंप्रेशन खराब हो गया। कोई भी आपका कॉपी पेस्ट जेनरिक रिप्लाई, आपने वो जो 4 केसेस और में लिखा वही कॉपी पेस्ट कर दिया उसको यहाँ पे चिपका दिया, दैट डजंट लुक गुड। थोड़ा सा एफर्ट कर लो, थोड़ा कोई मतलब कि थोड़ा सा एआई को यूज कर लो अगर जो भी है, लेकिन रिप्लाई शुड लुक कि इस केस के लिए आपने एफर्ट किया है। एंड अगर अच्छा रिप्लाई बनाया होता है इट इज अपेरेंट, इट लुक्स दैट assessee, the taxpayer, the council, they have worked on this case, they have tried to reply to each and everything। So please don't make generic replies,
it should be specific, it should quote the necessary with the relevant sections and the case laws applicable in that case. जहां पे भी रिवाइज करने की या अपडेटेड, जैसे अब तो नए एक्ट में हमने पीछे पढ़ा, अब तो अलाउ कर दिया है इन्होंने कि अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग आप कर सकते हैं 10% टैक्स पे करके। तो जो जो ऐसे प्रोविजंस हैं उन सब का लाभ लीजिए, उन सब का बेनिफिट लीजिए एंड उन सब को यूज करके नेसेसरी रिलीफ्स के लिए आप कीजिए। तो अब जैसे रीअसेसमेंट है, उन्होंने आपको बोला 148 के रिस्पॉन्स में आपने आईटीआर ही नहीं भरी हुई थी असेसी ने, फिर आपने उनको बोला गया कि 148 के बेसिस की आईटीआर, काफी काउंसिल होते हैं वो लड़ते रहते हैं, वो मतलब दिन के 4 रिप्लाईज अपलोड कर रहे हैं, वो उसने जो एक नोटिस एक आईटीआर बोली थी बना के कॉम्पिटिशन भेजो और जेसन अपलोड करो, वो नहीं करेंगे, लेकिन कॉन्टिन्यूसली दे विल कीप ऑन आर्ग्यूइंग विद द डिपार्टमेंट। सो व्हाट विल हैपन, इट इज इट इज अ नो ब्रेनर, ये एक्सपार्टे ऑर्डर होगा और इसमें कोई भी ही विल नॉट लिसन टू वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो उसकी ग्रॉस से सीट आई होगी या जैसे भी उसको लगता है वो उसको उस हिसाब से 8% लगा के, अगर छोटा केस है बड़ा केस है तो अपने हिसाब से अनएक्सप्लेन्ड इनकम का विल पास द ऑर्डर। सो व्हेन द ऑफिसर इज आस्किंग यू टू फाइल द आईटीआर, तो उसमें यू नीड टू फाइल इट। तो और जहां पे यू रीओपनिंग वैलिड है, फॉर एग्जाम्पल अगर रीओपनिंग में इनकम एस्केपिंग असेसमेंट एक्सीड करनी चाहिए थी 50 लाख रुपीज, नहीं हुई है, तो लिखो ना भाई हमारी इनकम एस्केपिंग असेसमेंट इतनी तो है ही नहीं, अब जो टाइम बार हो चुका है केस को टेक्निकल ग्राउंड्स पे, तो क्वैश कराने की कोशिश करो। तो यू नीड टू सी दीज काइंड ऑफ थिंग्स एज आई हैव कवर्ड इन डिटेल पहले ही, बट यू नीड टू कवर इन चीजों की टेक्निकलिटीज को, यू नीड टू बी वेरी astute while observing it, you should be a keen observer, between the lines पढ़ो उसको, तो उसी में से आपको जवाब निकलेगा कि किस तरीके से आपने केस को रिप्लाई करना है। तो अनदर थिंग यू नीड टू सी कि अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग का है, सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की पेनल्टी अगर इन्वोक कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई क्लेम लिया है, अगर मेरा क्लेम डिनाई किया है और जो कि क्वेश्चन ऑफ लॉ है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं है कि मैंने कोई गलत नहीं लिया था, बस एओ को लग रहा है कि ये सेक्शन नहीं ये सेक्शन लगेगी, तो वो ये पेनल्टी प्रोविजन नहीं लगा सकते, मिस रिपोर्टिंग नहीं लगा सकते। तो ऐसे जो चीज है वो आपको तभी आएंगे जब आप केसेस पढ़ोगे, वो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इस काउंसिल ने जो सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने रिलीफ दिलवाया है, तो वो बहुत ही you can yourself judge the competence, level of competence these people have, and the level of drafting well drafted cases they must be have given, then only they have got the relief. So accordingly you also inculcate a practice of learning from how they have drafted it, and uh, accordingly highlight the mistake in the allegations of the department, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से। और ये एक मैं चीज देखता हूँ कि एविडेंसेस हैं सारा, एक ये पता नहीं कौन सी नई चीज है कि मतलब वहां पे हमारे जब रिप्लाईज आते हैं हर हेड का अलग रिप्लाई, मल्टीपल हेड्स दिख रहे होते हैं, लेकिन हमारे काउंसिल्स को क्या करना है कि सारे एविडेंसेस को मर्ज करना है और एक पीडीएफ अपलोड कर देनी है। उसका क्या, वो असेसिंग ऑफिसर के पास क्या इतना टाइम है कि वो एक एक आपकी मतलब आपने 200 पेज अपलोड किया है वो 200 पेज बैठ के देखेगा, उसको पता नहीं है ना वो पेजेस नंबर्ड है, ना उसके कोई प्रॉपर रिप्लाई वो प्रॉपर क्रोनोलॉजी मेंटेन्ड है, ना कोई लिखा भी है किस चीज का है, बस उसको मर्ज करके एविडेंसेस लिख के कर दिया अपलोड। व्हाट इज दिस? do you the I would say councils professionals should हर एक, अगर वहां पे उस चीज का ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट, जो डिमांड ऑर्डर, जो जो चीज का जो जो हेड है बैलेंस शीट का इनकम पीएनएल का, इसका जो जो हेड है ना उसमें डालो, फिर अदर्स में भी आपको ऑप्शन आता है, आप मल्टीपल जितना चाहे खोल सकते हो उसमें। ये टेक्निकल चीजें आई गेस काफी लोग आपको बड़े केस लॉज वगैरह वो, लेकिन ये टेक्निकल छोटी छोटी चीजें ना आपको केस जिता देती हैं। तो इन सब चीजों पे प्लीज बी वेरी कॉशियस कि उस चीज को आप किस तरीके से कर रहे हो। आपको जैसे हम करते हैं ना जब पेपर हम देते थे, हम कैसे उसको हाईलाइट करते थे, उसको किस तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन आपने आंसर शीट की अच्छी करते थे ताकि जो एग्जामिनर है तो थोड़ा उसको आसान हो समझने में, उसको साथ के साथ दिख जाए, है ना, और ताकि वो कर दे। जहां पे हाईलाइटेड होता था उसके पास भी टाइम कम होता था, यहाँ पे तो एओ के पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लाखों केसेस पेंडिंग है,
तो क्या उनके पास इतना टाइम होगा कि आपके सारे मर्ज रिप्लाईज को करके देगा? आपने अलग से देके रखा है, नंबरिंग करके रखी है, प्रॉपरली आपने डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके रखी हुई है, तो ऑब्वियसली योर रिप्लाई विल हैव एन एज, and it will serve the purpose, and it will definitely be one of the stepping stones towards getting justice. तो अपने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं प्रोफेशनल्स के लिए, अपने प्रॉपर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, STIS रिकंसिलेशन सारी बना के रखिए, ट्रैक कीजिए क्या कंप्लायंस डेडलाइंस हैं, प्रिपेयर कीजिए स्पीकिंग सबमिशंस, जो भी आपकी अगर आपने बोलना है थोड़ा उसको एक बार रिहर्स कर लीजिए। अगर आपने ITAT में जाके वहां पे बेंच पे आपने बेंच के सामने सबमिशंस रखने हैं, आपने पोडियम पे खड़े होना है, तो प्लीज अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो जाके एक बार उस चीज को बी अप्रेज्ड विद प्रोसेस। यू शुड अपनी स्क्रिप्ट पहले तैयार कर लीजिए, एक बार उसको 2-3 बार ट्राई कर लीजिए। जैसे हम अगर डिबेट्स जो लोग करते थे उनको पता है कि हम बचपन में कैसे डिबेट्स का पहले बना के स्क्रिप्ट बना के दो कितने बारी खुद एक बार पढ़ लेते थे, फिर उसके बाद जाके बोलते थे। अभी आपकी स्पीच के ऊपर पूरा एक बंदे की सारा करोड़ों की लाखों की जो भी है टैक्स देना या ना देना डिपेंडेंट है। सो आई थिंक सो यू शुड बी वेरी वेरी cautious about what you speak, and you should be well prepared in advance. So that was all for today. So if anybody has any specific query, they can WhatsApp me on this. And अगर कोई अभी आए हैं तो हेमंत जी हम वो ले सकते हैं queries, तो सर अभी कोई क्वेरी नहीं है। चैट बॉक्स में कोई क्वेरी नहीं है तो नो नो सर। इशू, दिस इज माय नंबर, दे कैन व्हाट्सएप मी द क्वेरी। कोई लिटिगेशंस को कोई सेक्शन उनकी कोई ऐसी उनको केस लॉ ऐसा कोई कोई भी रिप्लाई में कोई इशू आ रहा है, कोई उनको नोटिस ऐसा आया हुआ है जहां पे उनको समझ नहीं आ रहा कौन सी सेक्शन का लगेगा, तो आई विल ट्राई कि एक दो कभी जैसे मैं बिजी होता हूँ तो 2 दिन तक रिप्लाई आ जाएगा, वरना तो आई ट्राई टू गिव रिप्लाई विद इन इमीडिएटली ही। तो प्लीज जितना हो सके एट द एंड ऑफ द डे, एज आई अर्लियर स्टेटेड ऑल्सो, कि जितना हो सके स्टडी कीजिए सो दैट वी अपहोल्ड डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ दिस esteemed प्रोफेशन। So thank you so much once of all, thank you so much to the CPE committee, to Satish sir, to the entire team who has given me this opportunity, and they continue to give me the honor of coming to this platform and giving disseminating my information, disseminating my knowledge, and sharing my experience with all the learned professionals. I'm so humbled. I'm so thankful to you. And as a parting words, I would like to quote a phrase which was said by one of the greatest leaders of the independence era, Bhagat Singh. He was about to be hanged. He wrote with a piece of charcoal on the walls of his prison. It was midnight, that late रात को उसको hang किया जाना था. With the wall on the walls of his prison, he wrote with a piece of charcoal. इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर इश्क लिखना चाहूं तो भी इनकलाब लिखा जाता है, अगर इश्क लिखना चाहूं तो भी इनकलाब लिखा जाता है। यू all CAs, we all CAs should be unapologetically, hardworkingly, should work towards excellence, and should try to bring laurels and proud to our esteemed alma mater ICAI, and should work to not only uphold but increase the reputation, the pride of our profession. Thank you so much. Thank you, IZ. Now Thank you so much, sir. on behalf of committee, respected chairman of the CP committee, CA Satish Kumar Gupta ji, vice chairman CA Vishnu Kumar Agarwal ji, our esteemed speaker CA Sunil Kumar ji, and CA Ayush Sahane ji, and all the distinguished participants, good evening. As we come to the close of the today's insightful webinar, I would like to express my sincere gratitude to our learned speaker for their sharing
their valuable knowledge and practical perspective on the new labor codes, income tax notice, and key amendments under Budget 2026. The deliberation was highly informative and will certainly help members in understanding the evolving regulatory and taxation landscape. I also extend my appreciation to the Continuing Professional Education Committee of the ICI for organizing this timely and relevant program and providing members with an excellent platform for continuous learning. A special thanks to all the participants who joined us today and made session interactive and meaningful through their active participation. On behalf of the organizing team, I, CA Hemant Loya, once again thank everyone for their presence and contribution. We look forward to your continued participation in future CP programs. Thank you and wishing you all a very good evening. Thank you, sir.